Hello students, how are you? In my last class, I have discussed about the integrated rate equation of zero order reaction. Zero order reaction का ना जो integrated rate equation था ना उसके ऊपर मैंने थोड़ा तुमको derivation भी दिखाया था. And integrated rate equation क्या वो कुछ नहीं करता, वो generally एक तुमको रिलेशन देगा. रिलेशन किसका देगा? रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड व्हाट एंड कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड व्हाट एंड रेट कांस्टेंट. और मैं ये भी बोला था डिफरेंट ऑर्डर का रिएक्शन का ना इंटीग्रेटेड रिएक्शन अलग अलग होता है. जीरो ऑर्डर का तुमको मैंने करके दिखाया था. जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रिएक्शन क्या था? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? T equal to A naught minus A by how much? By K. Okay, in first order reaction you will get another integrated rate equation. In second order you will get another integrated rate equation. But second order तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. Only you will have to learn only zero order and first order. Okay, clear? Now today I am going to do numericals. Okay, related to integrated rate equation for zero order reaction. जो मैंने last class में derivation किया था ना, उसका ना हम थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल्स करके दिखाता है. फॉर्मूला हाँ आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम. The rate constant of a zero order reaction in A. हाँ, reaction reactant का भी नाम भी तुमको दिया है A. हाँ, in A is this is what mol 0.003 mol liter per second inverse. Okay. Okay, now let's see. The rate constant of a zero order reaction in A is the value of rate constant is given. Okay, now let's see how long will it take. Means what? In that तुमको ना time निकालना पड़ेगा. Okay, just determine the time when the initial concentration of A falls from what? 0.10 m is moles per liter. 0.10 m to 0.075. To fall of initial concentration from this to this. Okay, यहाँ से यहाँ होने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा? हाँ, इन द रिएक्शन तुमको टाइम निकालना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन पहले ये था 0.10 m टू व्हाट टू दिस वन. एंड इन द क्वेश्चन रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया गया है. तुमको ना टाइम निकालना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी. हाँ, देखो ऐसे लिखना है इन एग्जाम. राइट लाइक दिस. एग्जाम में तुम लोग ऐसे लिखना है एंड क्लीन लिखना. हाँ, पूरा टीचर को समझ में आता है, पूरा क्लीन लिखना है एग्जाम में. For a zero order reaction, what the integrated rate equation? This is what? This is T equal to how much? A naught minus A by K. For a zero order reaction, we have T equal to A naught minus K. A naught minus A by what? By K. Here, okay. What the initial concentration? A naught का वैल्यू क्या है? This A naught मैंने बोला था in my last class. A naught represent what? Initial concentration of the reactant. And A क्या था? Concentration after टाइम t. ओके, एंड k इज रेट कांस्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a naught? a naught का वैल्यू कितना है? 0.10 m.
व्हाट द वैल्यू ऑफ ए का एक व्हाट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है देख लो 0.075 m ओके। व्हाट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना है दैट कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 0.003 what 3 mole what mole liter inverse second inverse okay। now let's say in place of this in place of देखो mole देखो this term mole liter inverse in place of this you can write what you can write capital M देखो इसके जगह तुम कैपिटल एम भी लिख सकते हो मॉल पर लिटर मीन्स मोलारिटी दिस कैपिटल एम मीन्स मोलारिटी ऐसे भी लिख सकते हो ओके। लेट आई डिस्कस मैं तुमको डिस्कस करेंगे मैंने एम क्यों लिखा हाँ थोड़ी देर बाद तुमको मालूम चल जाएगा एम मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर कैपिटल एम क्लियर ना लेट्स सी जस्ट पुट दिस वैल्यू इस वैल्यू को ना यहाँ पर पुट करो तुम लोग देयरफॉर देखो देयरफॉर t equal to how much t equal to just put this value of a naught का वैल्यू पुट करो हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a naught 0.10 m minus 0.075 m by k how much 0.00 this will be 0.003 m what m s to the power minus 1 now this minus this minus this will be how much this will be how much this will be 0.0 this will be 2 what 2 0.02 this will be how much 25 divided by how much divided by 0. This will have 0.003 clear and let's say m will be common यहाँ से ना m common हो जाएगा this will be m and remaining is what remaining is m s to the power minus 1 देखो मैंने m को क्यों लिखा कैपिटल m को बिकॉज हाँ लेट्स से ये देखो m विल बी कॉमन ये तुमको कॉमन मिल जाएगा एंड m ये देखो दिस सेम देखो ये m जो है ना यही m है सो दिस विल बी कैंसिल आउट देखो सेम हो गया मीन्स सेम करने के लिए मैं कॉमन जाने के लिए मैंने मॉल पर लिटर इनवर्स को m लिख दिया क्लियर ओके ना तुमको इजी लगेगा m लिख देने के बाद तुमको इजी लगेगा कैंसिल कर देना तुम लोग एंड उसको हाँ टू रिमूव दिस पॉइंट ओके इस पॉइंट को ना तुम रिमूव कर देना हाँ टू रिमूव दिस पॉइंट जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर एग्जाम में इन एग्जाम जनरली स्टूडेंट जनरली कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा सो इस इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पॉइंट को ना रिमूव कर देना है करने में इजी हो जाएगा तुम लोग को देखो ये व्हाट पॉइंट इज व्हाट बिफोर 3 digits सो इसको ना 1000 से इंटू कर देना 0.25 इंटू how much 1000 this will be how much this is 0.003 into how much into 1000 so this will be how much this will be when s to the power minus 1 go upper this will be what s okay now this will be how much this will be 25 this is 25 this is what this is 3s so 25 by 3 कितना होगा 25 by 3 8 हाँ 25 by 3 कितना होगा 8 होगा श्योर हाँ 8.3 okay now let's see after solving you will get this one 25 by 3 this will how much 8.3 unit is what unit is second तुम लोग I request all of you हाँ तुम लोग ये आंसर चेक कर लेना ये कितना आएगा 8.3 आएगा श्योर हाँ ओके so generally this types of question will come in exam में तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखाया जाएगा but please remember this formula okay without this you cannot do the न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला मालूम नहीं हुआ तो तुम न्यूमेरिकल्स कैसे करेगा उसके लिए पूरा प्रैक्टिस करना घर में पूरा प्रैक्टिस करना ओके क्लियर नाउ लेट्स सी हाँ नाउ टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन ए न्यू टॉपिक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे देखो
Okay, now let's see. Okay, this is the new topic. Okay, half life period. Half life period क्या होता है ना देखो. Half life period of a reaction, okay, is defined. Okay, half life period of a reaction is defined as, okay, as the what? As the time, okay, during which, at the time during which the concentration of a reactant is what? Is reduced to half of its initial concentration. Means what? इन हाफ लाइफ, ओके, इन हाफ लाइफ पीरियड जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है ना रिएक्टेंट का वो आधा हो जाता है. ओके, सपोज तुम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज 100 ग्राम. सो इन हाफ लाइफ पीरियड दिस विल बी व्हाट? रिड्यूस टू व्हाट? दिस विल बी रिड्यूस टू हाफ. सो दिस विल बी हाउ मच? 100/2. This will be what? This will be 50 grams. So at half life period 100 gram will be reduced to how much? This amount, 50. Okay, now let's say generally, okay, generally half life period, okay, generally half life period is, okay, represented by this one. Half life period, okay, half life period is represented by this symbol. हाँ, is represented by, इसको ऐसे लिखना by, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है. देखो टी हाफ. नाउ देखो, हाँ, दिस इज टी हाफ. टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ पीरियड. ओके, और यू कैन राइट लाइक दिस, और दिस इज टी. ओके, 1/2 मीन्स व्हाट? 1/2 मीन्स 0.5. ओके, और हाँ, और you can write also this is one t tau. This is also half life period. This symbol is tau. Okay, okay, now let's see. But in the textbook, the half life period in your textbook, half life period is generally represented by t half. ऐसे लिखते हैं textbook में. But you can also write like this 0.5. Okay, don't use this symbol at present. ये तुमको higher study में दिखाई देगा. This is t tau also. Okay, now let's see. ऐसे represent कर सकते हो तुम लोग. ऐसे represent कर सकते हो. After what? At half life period, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ. जो इनिशियल जो बिगिनिंग का कॉन्सेंट्रेशन था ना एट हाफ लाइफ पीरियड वो आधा हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी. In the last class I have derived the integrated rate equation for zero order reaction. Now today I am going to derive the half life period of a zero order reaction. half life zero order reaction का ना half life period कैसे निकलता है ना देखो. Okay, now let's see. For a zero order reaction we have, now देखो, I am going to derive a formula related to half life period of a zero order reaction. Zero order reaction का half life period कैसे निकलता है ना देखो. For a zero order reaction, for a zero order reaction, okay, we have फॉर्मूला क्या था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, वी हैव टी इक्वल टू हाउ मच? टी इक्वल टू ए नॉट माइनस हाउ मच? माइनस ए बाय हाउ मच? बाय के. वेट, ओके, वेट ए क्या था? ए लास्ट क्लास में बोला था ना, ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. वेट ए इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, now let's say initial concentration of the what? Initial concentration of the reactant. Okay, now let's say K. A is what? A is concentration at time t. Concentration at time t. Okay, K is what? K is that constant. That constant. Now let's say half life period is represented by what? Half life period is represented by T half. Now let's see at half life period. Now देखो half life period. Okay, in place of T you can write what? T equal to how much? T equal to T half. Now and what? A. This is the, okay, this is the, let's say this is the concentration at time T. At half life period concentration will be what? This concentration is what? Reduced to what? Reduced to half of its initial concentration. मैंने बोला था ना इसका वैल्यू क्या होगा? जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ना उसका आधा हो जाएगा. ना देखो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन टाइप टी. व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट. ओके, ए नॉट. सो ए हाफ मीन्स व्हाट? ए नॉट बाई 2. अगेन आई रिपीट, इसको देख लो. हाँ, इसको देख लो. According to definition of half life period, again I repeat, according to definition of half life period, definition क्या था? At half life period,
this is the time at what at what initial concentration of a reactant is reduced to हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन वो आधा हो जाता है डेफिनेशन पढ़ना तुम लोग डेफिनेशन अभी अभी दिया था ना मैंने हाँ देखो सो इन एट हाफ लाइफ पीरियड ए इक्वल टू ए नॉट बाई टू वो कंसंट्रेशन इनिशियल कौन से आधा हो जाता है हाँ इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करो नाउ देखो देयरफॉर ओके देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो t इक्वल टू हाउ मच t इन प्लेस ऑफ t यू कैन पुट व्हाट एट हाफ लाइफ पीरियड t इक्वल टू t हाफ दिस इज हाउ मच दिस इज a नॉट माइनस हाउ मच व्हाट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना है a नॉट बाय 2 देखो a नॉट बाय 2 बाय हाउ मच बाय दिस इज k क्लियर ना देखो आफ्टर दैट t हाफ ओके k इसका एलसीएम लेना दिस विल बी हाउ मच 2 दिस विल बी हाउ मच 2a नॉट माइनस a नॉट दोनों का एलसीएम लेना 2 मिलेगा ऊपर में क्या आ जाएगा 2a नॉट माइनस a नॉट आफ्टर नाउ देखो उसके बाद देखो दिस इज व्हाट दिस इज t हाफ इक्वल टू हाउ मच इक्वल टू दिस विल बी हाउ मच दिस विल देखो 2a नॉट माइनस a नॉट दिस विल बी हाउ मच a नॉट ये तो a नॉट ही आ जाएगा तो दिस विल बी हुआ 2 कहाँ जाएगा तो नीचे ही जाएगा ना दिस इज 2k देख लो इसको पूरा ठीक तरह से देख लो मैंने इसको एलसीएम लिया आफ्टर दैट मिला क्या मिला 2a नॉट माइनस a नॉट तुमको क्या मिल जाएगा a नॉट मिल जाएगा ये 2 कहाँ है तो यहाँ पर ही होगा ना this is what 2k okay this is the okay now let's say please remember this is the expression okay this is the expression for half life period of zero order reaction हाँ ये zero order reaction का half life period है ना देखो t half equal to a naught by k ना देखो half life period of a zero order reaction is directly proportional हुआ डायरेक्टली से a naught ये a naught के साथ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना देखो ये लाइन देख लो मैं कुछ लाइन लिखने जा रहा हूँ देखो ये याद रखना तुम लोग हाँ ये पॉइंट टू रिमेम्बर ओके हाफ लाइफ पीरियड ओके पीरियड सिंबल इज व्हाट द सिंबल ऑफ हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ और यू कैन नॉट ऑल्सो 0.5 भी लिख सकते हो तुम लोग हाँ हाफ लाइफ पीरियड half-life period of a zero order reaction is directly proportional to the what initial concentration of the what of the reactant okay this lines okay this line come from this one this expression इस expression से तुमको ये line ही मिल जाएगा देखो t half directly proportional to a naught half life period okay of a zero order reaction is directly what is directly proportional to the what proportional to the initial concentration what is directly proportional to the initial concentration of the reactant clear now let's see हाँ इसके साथ ना directly proportional हो रहा है ना देखो means what means t half directly proportional to what directly proportional to a naught clear now let's say if you draw a graph t half versus a naught अगर तुम लोग ने एक ग्राफ ड्रॉ किया for a zero order reaction okay graph between t half and initial concentration you will get this types of graph तुमको ना ऐसा टाइप्स का ग्राफ मिल जाएगा ना देखो this is the graph suppose question is this one हाँ suppose क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में सपोज हाँ ऐसे क्वेश्चन तुमको मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ ना दिखाओ
Draw a graph of T half versus initial concentration. Okay, for a zero order reaction. Suppose question is this one. Draw a graph of T half versus initial concentration of reactant. Initial concentration, right, like this. Initial concentration of reactant for a zero order reaction. Zero order reaction. Suppose in exam ऐसे क्वेश्चन आ गया टू नो दिस टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तुम लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने क्या सिखाया था, हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ये सब पढ़ना, पूरा सीरियसली पढ़ना। आफ्टर दैट यू कैन डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन तुमको पता चलेगा कैसे करता है। सो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ देखो, ग्राफ विल ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ना। ग्राफ क्या हो जाएगा देखो, दिस इज टी हाफ, this is what, this is initial concentration, this is initial concentration. Okay, initial concentration is what, is A naught. Okay, this is the reactant. You can write anyone, you can write R also. I have put here just A naught means what, initial concentration. So graph will be how much, graph will be this one. Clear? Means what, this is directly proportional to this one, so we'll get this types of graph. Okay, now in my last class I have derived the integrated rate equation for what, integrated rate equation for zero order reaction. Today's class I have derived the integrated rate equation I have derived the half life period of what, half life period of a zero order reaction. Okay, zero order reaction का half life period कैसे होता है, means what, there are two important things for zero order reaction. Zero order reaction को ना दो important point तुम लोग याद रखना, expression याद रखना ना। देखो ये है, ये दो एक्सप्रेशन तुम लोग याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डिराइवेशन भी कर दिया ओके। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दीज आर, प्लीज रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट लास्ट क्लास में ये क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। Okay, for a zero order reaction, for a zero order reaction is given by what, is given by क्या था, this is T equal to how much, T equal to A naught minus A by K. Last class, in my last class now let's say number 2, आज मैंने क्या सिखाया half life period, half life period of a zero order, half life period of a zero order reaction, half life period of a zero order reaction is given by half life period of a zero order reaction is given by what, T half equal to how much, क्या था, A naught by how much, A naught by what, A naught by 2K. आज मैंने यह सिखाया था, लास्ट क्लास मैंने यह सिखाया था। प्लीज रिमेंबर दिस टू एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना। दिस एक्सप्रेशन विल हेल्प यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल्स होगा ना, इसके ऊपर एग्जाम में इसके ये दोनों के ऊपर बेस कर ही आता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से भी आता है, वैल्यू पुट करना आंसर मिलेगा। हाफ लाइफ से भी आता है कभी कभी, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2K। एंड डिराइवेशन पूरा प्रैक्टिस करना नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल शो द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन करना जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास तुम लोग को दिखाऊंगा। ओके।